We'll start Unit 4 today. सर वो रिसाइकल रिएक्टर थर्ड यूनिट में है ना, ऑटो कैटालिटिक रिएक्टर वगैरह। हाँ, वो थर्ड यूनिट में है, लेकिन मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आता नहीं है उसमें। ओके सर, गॉट इट। कर सकते हैं, टाइम बचेगा आखिरी में तो करेंगे, क्योंकि अभी अपने 3 यूनिट और बचे हुए हैं एंड वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट 31 लेक्चर्स। कितने लेक्चर्स मिलेंगे पता नहीं मेरे को, ख़त्म होगा टर्म पता नहीं। अगर टाइम बचा तो we'll come back after unit 6 and then I'll cover autocatalytic, catalytic and recycle reactor. थोड़ा concept difficult है, इसलिए I just wanted to leave it at this stage. ओके सर। एग्जाम में वैसे जनरली कुछ नहीं आता है उसमें, but yeah, from understanding point of view, these are good topics. Okay, so unit 4 is essentially multiple reactions. Multiple reactions में we have already seen series reactions. याद है किसी को? Unit 2 में दिया था हमने, A goes to R goes to S. So we had done the derivation कि CR max कब होता है, how do you get the intermediate max concentration and what is the time required for that. So we already covered series reactions. So we are going to do essentially parallel reactions in this unit. Okay, so when you talk about design for parallel reactions, it could be A plus B or it could be A, doesn't matter. Reactants combine to form two products in parallel streams. It can form either R or S. Okay, so that is parallel reactions. Series reactions was A goes to R goes to S. ये हमने already cover किया था, so I'm not going to cover that now. We are going to focus mainly on parallel reactions. And many times in industry you have a lot of parallel reactions, side reactions जिसको बोलते हैं, जो undesired reaction होता है, and we want to minimize the undesired product which is not valuable. You want to maximize the valuable product. So in this case there are two distinct analyses. One is reactor size, which you already done. Then second is product distribution. So how do you maximize R and minimize S? That is called product distribution. So 1 and 2, that is reactor size and product distribution, run counter to each other. It means if I want to minimize the size, I may not get the product distribution which is desired. If I want to get the desired product distribution, I may not get the minimum reactor size. So these are all conflicting things. So then you have to do economic analysis, and that will tell us के क्या है, which is the best option for reactor design. But in general, we focus mainly on product distribution because there's no point in having an undesirable product which has no value. It's waste, total waste. So in this case, we are going to look at only epsilon A equal to 0 cases, liquid phase reactions, and we'll start with qualitative discussion. And then we'll go to quantitative discussion, how we actually derive how much is the product formed in situations like this. Okay, so we have a product reactant A or A plus B, doesn't really matter what it is going to giving R, which is desired product, and a parallel reaction gives S, which is undesired product. So if I write rate of reaction for R, it is dCr by dt is equal to K1 into Ca raised to power of A1. If order of reaction is A1, for R formation, then power is A1, and Rs is equal to dCs by dt equal to K2 into Ca raised to power of A2. So order of reaction here is A2.
Okay, so then you can divide equation 1 by equation 2, and what you get is RR upon RS, which is nothing but dCr by dt divided by dCr by dt, and this dt cancels out. So what you get is dCr by dCs is equal to K1 upon K2 into Ca raised to power of A1 minus A2. Okay, so if you want to maximize R, that is the desired product, this ratio of RR by RS should be as large as possible. So in this case, if you look at this equation 3, the only way you can control is through Ca, concentration of A. Otherwise, to temperature यहाँ पर आएगा, temperature effect is here, we'll see that later also, but this is more significant, Ca. Okay, so K1, K2, K1, A1 and A2 are all fixed at a given temperature. If you fix the temperature of reaction, these are all fixed. So only possible changes or what we can control or change is concentration of the reactant. Okay, in this case, we have seen this. We can keep Ca or reactant concentration low in the reactor by using MFR, because MFR में क्या होता है कि if you take feed at Ca naught, and the product concentration is Ca here, then the reactant here is immediately Ca. Right? ये देखा था हमने. So in mixed flow reactor, the concentration immediately drops from Ca naught to Ca, which is the final concentration. So if you want to keep Ca low in the reactor, you'll see how when we require Ca low. But if I want to have Ca low, that means this value low, I can do it by using mixed flow reactor. And we'll see in which cases we should have low Ca and which cases we should have high Ca. But right now we are seeing how do we maintain a certain concentration of A in the reactor. Okay, that is one thing. Or the other thing is maintaining high conversion. If the conversion is high, Ca becomes definitely low. Or increasing inerts in the feed. We had seen this in CET2. Inerts का effect देखा था आपने, right? If I increase the inerts concentration, automatically the Ca concentration or concentration of the feed or reactant becomes low. Or other thing is decreasing pressure in the gas phase reaction. If it's a gas phase reaction, then we decrease the pressure, then automatically it has the same effect as reducing the concentration of A, because in the gas phase it is actually Ca is equal to what? What is Ca? PRT. Pa by RT. So partial pressure of A कम किया, like if I decrease the pressure, partial pressure of A automatically decreases, so Ca decreases. Similarly for inerts also, same thing. If I add inerts, partial pressure of reactant becomes low and automatically Ca becomes low. Any questions on how to maintain low Ca in the reactor? Conceptually, you should understand. सर ये लो सी क्यों लिया वो नहीं समझे. We'll see when we need low Ca, but first understand how to keep concentration low if it is required. Then we'll see when to keep low and when to keep high. ठीक है? Is that okay, Ritesh? First, yes, understand how do we achieve low concentration of reactant in the reactor. Then we'll see when we should keep low, when we should keep high. That is second step. Okay. So ये समझ में आया how to achieve low concentration of reactant in the reactor? All these four options. Okay. So second option is Ca high. अगर high चाहिए Ca तो हम कैसे achieve कर सकते हैं? We have seen that in PFR it is always high concentration, because we had seen yesterday also. If I take PFR and I plot concentration, it is always decreasing like this. This Ca naught, this Ca, whereas MFR में directly C हो जाता है. So high concentration is achieved in batch reactor of PFR, what do you call,
performance of batch and PFR is similar. That is why you can use batch or PFR. Or maintaining low conversion. Conversion low रहा तो CA high रहेगा, right? And again same thing. If I take CA equal to PA by RT, if I remove inerts, that means inerts remove कर दिया तो PA बढ़ जाएगा, right? PA बढ़ गया तो automatically CA बढ़ जाएगा. Or increasing pressure, again it will increase the PA, partial pressure of A in the gas phase reaction, so it will increase the CA. सर Yeah. सर पीएफआर के लिए कन्वर्जन ज्यादा ही होता है ना, तो हम यहाँ पे लो कन्वर्जन कैसे रखेंगे? Then these are separate independent options. If I take MFR, I should keep low conversion. समझा ना? If I take PFR, or already it achieves high concentration. यहाँ पर वैसे रहेगा. If I take PFR, that's what it means. If I use MFR, automatically it becomes low concentration. If I'm using PFR, I should have high conversion. That means automatically it becomes CA concentration is low. Yes. PFR or batch doesn't matter. ठीक है? Is this understood? How to achieve CA low and high in the reactor? When to achieve that? When we should target it? We'll see later. ठीक है? So if I look at that equation, RR upon RS is equal to K1 by K2 is CA raised to power A1 minus A2. Now if A1 order of first reaction, desirable reaction, you've seen that, right? This is the order of reaction here, and this is the order of reaction here, right? So in this case, if you are looking at A1, which is more than A2, the order of reaction or the desirable reaction is more, suppose this is 2 and suppose this is 1, or 2.5, 1.5, 1.51, doesn't really matter. If it is more than A2, right, then this becomes right, A1 minus A2 is positive. ठीक है? If A1 minus A2 is positive, when will I get maximum R? ये fixed है, right? This is fixed. Only thing I can play with is this. So when can I achieve maximum R? When CA is low or high? High. High, right? So I need to have high CA. So we need batch or PFR. High CA is desirable since it increases R by S ratio, right? So in this case, we'll either use a batch reactor or a PFR, and which provides high concentration of A and hence favors formation of R, and hence would require minimum reactor size. समझ में आ रहा है? When we should have high concentration in the reactor. Any questions? सर तो लो क्यों रखेंगे हम पीएफआर में सीए की वैल्यू? देखेंगे ना, देखते हैं ना अभी. First look at when do we need high concentration. We need high CA when we have A1 which is greater than A2. ठीक है? Now if A1 is less than A2, then what? A1 minus A2 becomes what? Negative, right? Because it's CA to the power of A1 minus A2. ये negative हो गया तो क्या हो जाएगा? It will become 1 upon CA raised to the power of A2 minus A1, right? So when will I get maximum R in this case? When A1 is less than A2. सर कम लेंगे. Then CA is low, right? So in this case, low CA is desirable to favor formation of R.
So MFR gives low concentration of Ca in the reactor. Therefore, you can use MFR. But this will require a large volume of the reactor. So बोला था हमने शुरू में, right? Product distribution चाहिए तो volume sacrifice करना पड़ेगा in some cases. Some cases it will be okay. ठीक है, समझ में आया? When to keep low and when to keep high concentration in the reactor of the reactants. We've seen how to keep, and then we are seeing when to keep low or high concentration of reactants. There are no questions. Let's proceed to third condition. When A1 is equal to A2, then A1 minus A2 becomes equal to 0. Right? So if A1 minus A2 equal to 0, it doesn't really matter what is the concentration, because now this is power is 0, so it doesn't depend on concentration of A. Right? Product distribution is fixed and hence not affected by type of reactor. I mean, FR kiya ki PFR kiya doesn't really matter, because order of reaction is same for desirable as well as undesirable reaction. Any questions on these scenarios? Okay, there are no questions. Second option is you can play with the temperature, right? Product distribution can also be controlled by varying K1 by K2. Right? यहाँ पर जो देखा था हमने, there are two ways of changing. One is K1 by K2, the temperature fixed. Sir, third point, sir, repeat. A1 is equals to A2. क्या बोल रहे हैं? A1 equal to A2. Sir, third point वाला, हाँ, A1 is equals to A2. Equal to A2 बोला तो A1 minus A2 is equal to 0 होगा, right? So A1 minus A2 is 0, then if you take a look at this equation, this power of Ca is 0. So if power of Ca is 0, it doesn't really matter what is the concentration, then it is independent of concentration. R upon Rs becomes K1 by K2. तो सर डिजायर्ड रिएक्शन के लिए क्या? टेम्परेचर है ना, देखेंगे ना. Then it's temperature, right? Second option is temperature. One is concentration. You can play with concentration, or we can play with the temperature to change K1 and K2. ठीक है? So in this case, I can say right. So Ca raised to power positive number. यहाँ पर I can write ठीक है, and here it is 0. So now next option is looking at temperature. So product distribution can also be controlled by varying or changing K1 by K2, and this can be done by changing temperature, and that will depend on activation energy. So if activation energy of first reaction is E1 and second reaction is E2, then K1 by K2 can be changed. If it is same, doesn't really matter. अगर E1 E2 सेम है तो कुछ सेम इफेक्ट होगा टेम्परेचर का दोनों पर, doesn't really matter. But if A1 and E1 and E2 activation energy of first reaction and second reaction are different, then we can manipulate or play with the temperature. ठीक है? So let's look at temperature. How do we use the temperature to change the distribution? Okay, so K1 is equal to K01, that is pre-exponential factor for first reaction, into e raised to power minus E1 by RT, and K2 is equal to K02, again the exponential factor, which is a constant, e raised to power minus E2 by RT. So K1 by K2 is nothing but K01 by K02, it is a constant, e raised to power minus E1 minus E2 by RT.
ठीक है, इक्वेशन 4. Now if E1 is greater than E2, right? Suppose E1 is greater than E2, that means ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, and exponential becomes negative, right? Because there is a minus sign here. Then K1 increases more than K2. जितना एक्टिवेशन ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे. हमने देखा था आई थिंक यूनिट 2 में, राइट? सो द रिएक्शन शुड बी डन एट हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर टू मैक्सिमाइज आर. लिमिटेशंस रहता है कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो यू शुड यूज मैक्सिमम टेम्परेचर एज फार एज पॉसिबल टू गेट मोर ऑफ आर. Any questions on E1 greater than E2? Any doubts? करके देखना है आपको. Let's do it. Suppose I say E1 is equal to 10,000 joules per mole Kelvin आएगा, and E2 is equal to say 8,000 joules per mole Kelvin. And ये रेशियो कुछ ये कांस्टेंट ही है, doesn't really matter. This is a deciding factor. So can you find out what is e raised to power minus E1 minus E2 by RT? And temperature is suppose 400 Kelvin. You want to try? What do you get? किया किसी ने? हाँ सर, वो 0.548 आ रहा है. 0.548 आ रहा है. ओके, सो ओके, और अगर उल्टा लिया तो सपोज आई टेक उल्टा हियर. सर तो फिर 1.824 आता है. 1.824. 1.824. उल्टा क्यों आ रहा है ये? उल्टा क्यों आ रहा है? एक मिनट. हेलो. या हाँ सर, अगर हम ऊपर के केस में दो टेम्परेचर ले, एक 400 और एक 600, क्या बोल तो रहे? कंपेयर कर सकते हैं ना हम. अगर ऊपर के केस है ना, जो पहले केस है, if E1 greater than E2,
वहां पे हमने टेम्परेचर अभी 400 केल्विन दिया है। अगर और एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर ले ले वहां और वो उन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर पे मतलब हमारा डिजायर्ड कंडीशन हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना। अभी 400 है, एक बार 600 लेके करते फिर देखते हैं ज्यादा करके देखो 600 पे। लेट्स सी, आई थिंक दिस इज इन यूनिट 5 में आता है, बट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इट हियर। लेट मी चेक। टेम्परेचर इफेक्ट बाद में करता है, यूनिट 5 में आता है वो, बट लेट मी सी कहाँ है। 0.669। ओके, सो टेम्परेचर बढ़ाया तो रेशियो बढ़ता है ना। हाँ राइट, दैट्स व्हाट इट इज एक्चुअली। सो 0.5 करीब था यहाँ पर। जीरो पॉइंट फाइव कितना था? 4 0.5, 0.669 ना, 0.67, और ये कितना था? 0.5। देवेंद्र, how much was it at 400 Kelvin? 0.55. 0.57. So as the temperature increases, the ratio increases, right? RR by RS is increasing. So it all depends on this also. Suppose I say this is 15,000, और फर्क पड़ेगा। ये close था 10,000, 8,000. So we take 15,000, 8,000, then it will be still more different, still different. Suppose I take 15,000 and 10,000. So it depends on activation energy difference भी कितना है, and the temperature भी कैसा होता है. So ultimately you see that this ratio is increasing. That is important. Right? I'll keep it at 10,000 only, but I'm just telling you क्या हो सकता है. ठीक है. और इसमें क्या होगा? In this case, if E1 is less than E2, K2 increases more than K1. So in this case, what you have is E1 minus E2 is negative. And if I take temperature equal to say 350 Kelvin, यहाँ पर कितना था और यहाँ पर कितना है? सर 350 के लिए 1.988। और 400 के लिए 1.8246। So you see this, in this case टेम्परेचर लोअर किया तो बढ़ता है रेशियो. ठीक है. समझ में आ रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? ये भी यूनिट 5 में आएगा एक्चुअली, बट आई इंट्रोड्यूस हियर बिकॉज थोड़ा कंटिन्यूटी में आ जाता है वो. ठीक है. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? So in this case, if E1 is less than E2, then we should have low temperature, as low as possible. है ना, रिएक्शन भी फिजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होगा, बट अंडर दोज कंडीशंस लोअर टेम्परेचर विल फेवर R formation. ठीक है. There are no questions. Let's look at other options by using catalyst. हमने concentration देखा था by changing the concentration of the reactants, and second was using the temperature or changing the temperature, and third option is by changing a catalyst or using a selective catalyst. So catalyst which is selective in accelerating or depressing specific reaction. Suppose this is essentially desirable के लिए रहेगा,
So it should accelerate desirable and this should depress the undesirable reaction. ठीक है? And this is the most effective way of controlling product distribution. And that is why many processes have catalysts which are proprietary. There are many licensing companies which develop their own catalyst and they sell it and they charge heavily or very high cost for the catalyst. Because the same effect of getting the desirable product can be achieved by just using the appropriate catalyst. Okay? Any questions on ways to achieve the desirable product and minimize the undesirable product? Concentration, temperature and catalyst. Catalyst का हमने study करने वाले that is not in purview of unit or rather CRE 1. That is heterogeneous reactions that you study in CRE 2. Temperature का हम देखेंगे next unit में in detail. And here we are going to focus mainly on the concentration effect. How do you get desired product by changing the concentration of the reactants? Okay, so summary of qualitative findings. Concentration of reactants is the key to proper control of product distribution. We have seen that. High reactant concentration favors reaction of higher order. ये भी देखा था A1 greater than E2. And low reactant concentration favors lower order reaction. And reactant concentration has no effect on product distribution when the reaction order is same. A1 equal to A2. Okay. So if you have two or more reactants, combinations of high or low reactant concentration can be obtained by controlling concentration of feed by having components in excess or by using correct contacting pattern, MFR, PFR, whatever, right? It can be a combination. So we'll see what are the various ways in which you can combine the reactors. Suppose you want both CA and CB high, depending on requirement. अगर CA CB दोनों high चाहिए अपने को तो कैसे करेंगे? कब जाएगा वो हमने देखा, right? When do we require high and when do we require low? That we have seen above. So what you can do is add A and B all at one time. You know, which reactor is this? Non-continuous operations, यानी बैच बैच रिएक्टर. So बैच रिएक्टर लिया, immediately हमने A और B ऐड कर दिया तो concentration will be high of A and B both. Right. Now if you want CA and CB both low, then what you do is add A and B slowly, धीरे धीरे ऐड करने का. तो क्या हो जाएगा, जितना ऐड करेंगे यहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा, राइट. दैट मीन्स कन्वर्शन बढ़ जाएगा. कन्वर्शन बढ़ गया तो CaCb का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा रिएक्टर में. तो धीरे धीरे ऐड करना है, जितना रिएक्ट ऐड करेंगे उतना रिएक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा 80-90%. तो थोड़ा ही बचेगा. सो देन इट इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A and B in this case. And other one is if you want Ca high and Cb low, तो स्टार्ट विथ दैट मीन्स A पूरा यहाँ पर लिया हमने और B धीरे धीरे ऐड किया. तो जितना B ऐड करेंगे वो रिएक्ट हो जाएगा के साथ. तो B का कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा, A का ऑलवेज हाई रहेगा. सर फिर ये सेमी बैच हो गया ना? क्या बोल रहे हैं? सेमी बैच रिएक्टर हो गया ना फिर? Yeah, it's kind of semi batch only, yeah, but non-continuous. It's a semi batch, yeah. This is batch. दोनों साथ में डंप कर दिया, ये बैच रिएक्टर हो गया, ये सेमी बैच हो गया. This is your batch reactor.
ठीक है, any questions on, we are basically looking at contacting patterns, how we can achieve some desirable concentration of A and B. अगर दो reactant है तो मिनिमम दो reactant रहता ही है, एक reaction का बहुत कम reaction रहता है. Okay, now if you want to have continuous flow operations, so then how do we achieve both A and B high? Right, जैसे हमने देखा था, right, if you have n number of MFRs, it's equivalent to a plug flow reactor, right, in n tending to infinity. Or we can use plug flow reactor. Plug flow reactor always concentration is high from the inlet to the outlet. Outlet rate is comparable to MFR. Or we can use multiple mixed flow reactors in series. ये हमने कल ही देखा था, right? Now, if you want both CA and CB low, so what do we do? You put it in the mixed flow reactor. Mixed flow reactor always low रहता है concentration. Continuous is your right. So we are continuously adding CA naught, this is CB naught, and this is CA, and this is CB. Depending on conversion, it is always low. So CA and CB will be both low in mixed flow reactor. हेलो Yeah. सर, पीएफआर में कन्वर्जन हाई होगा तो सी और सी भी लो होना चाहिए ना? Conversion, see your, कल मैंने बताया था आपको कि concentration is always higher in plug flow reactor compared to, we are always comparing mixed flow and plug flow, right? Plug flow reactor लिया मैंने तो concentration is always higher in a plug flow reactor than in a mixed flow reactor. Suppose this is CA naught, this is CA. Mixed flow reactor में क्या होता है? Immediately it becomes CA. So concentration higher रहता है. If you have a plug flow reactor, then you are going to get more conversion there, agreed, but depends on the size of the reactor. But concentration is always higher compared to a mixed flow reactor. फिर हमने ये भी देखा था कि when n tends to infinity, n number of mixed flow reactors in series equivalent to plug flow reactor. ये equivalent रहता है, right? कल देखा था हमने. सर फाइनल कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा ना दोनों में फॉर सेम कन्वर्जन? Okay, can you state your question in a different way, Dikshita? I understand your question, but I want you to express it in a different way. What are you trying to ask? आप बोल रहे हो अगर मैं सेम CN रखा मैंने, राइट? यू आर सेइंग दिस इज सेम एज दिस वन, राइट? कन्वर्जन सेम रहेगा दोनों का. But that is not the point. Point here is I want, for desirable product, I want CA to be high and CB to be high. So it will be high only in a PFR, not in a mixed flow reactor. Mixed flow reactor में always it is CA. It is not CA naught. It is never CA naught. Whereas in a plug flow reactor, it changes between CA naught and CA. तो कहाँ ज़्यादा रहेगा high concentration? We are not talking about conversion here. In this discussion, we are not talking about conversion at all. कहीं देखा अभी तक discussion conversion का? नहीं. We are talking only about how do we maximize the desirable product and minimize the undesirable product. समझ में आ रहा डिफरेंस दीक्षिता? यस सर. We are not talking about conversion here. Conversion is not important. I may have 90% conversion, but out of which 90%, suppose
50% is undesirable, कोई फायदा नहीं मेरे को. But if my conversion is 80% and 75% of that or 75% of total is desirable, it is much better. So distribution of desirable to undesirable is what we are discussing here. That is important. Conversion is not important in this case. Yes, we want to have maximum conversion, but अगर desirable product रहा तो desirable product कम होते गया conversion बढ़ा के तो कोई फायदा नहीं हमारे को. We are just wasting our resources. Yes, sir. Okay. So in this discussion, we are not talking about conversion. We are not talking about maximizing conversion. We are talking about maximizing R, which is desirable product. So, Pranav? Yes, sir. Yes, sir. Right? So we are always going to say कि अगर मेरे को high CA चाहिए, हमने देखा ऊपर कब high चाहिए, कब low चाहिए, right? You see in which situations we should have high CA and C. A and B is basically reactant only, right? हमने वहाँ पर एक reactant consider किया था. Suppose we had two reactants यहाँ पर, right? Suppose there are two reactants. So क्या हो जाएगा यहाँ पर एक और आ जाएगा CB. राइट. तो अगर दो रिएक्टेंट रहता तो ऐसा हो जाता ना हमारा रेट इक्वेशन और रेशियो ऑफ आर आर टू आर एस. राइट. इन दिस केस इट हैव बीन वन मोर हियर. यहाँ पर सी भी आता था. बराबर. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इफ देयर इज मोर देन वन रिएक्टेंट, जनरली एक ही रिएक्टेंट नहीं रहता है. होता है किसी किसी में पॉलीमराइजेशन वगैरह में एक ही रिएक्टेंट रहता है, कभी कभी दो भी रहता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द reaction, what are the, is it single reactant or two reactants. So we are talking about two situations in which there are two reactants, and it will all depend on A3 and A4, right? So this order of reaction, which is A3, right? दो रिएक्टेंट हुआ तो कैसे हैंडल करने का, बिकॉज इससे ही सॉ दैट हाउ टू गेट, एक ही रिएक्टेंट रहा तो हाउ टू गेट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन. नाउ देयर आर टू रिएक्टेंट्स, then how do we get high concentration or low concentration? That all depends on the order of reaction, right? Both the reactions में हाँ क्या ऑर्डर था, A3 का क्या वैल्यू है, A4 का क्या वैल्यू है. So it could be that I know I want high value of A1 is more than A2, but A3 is less than A4. हो सकता है ना. समझ में आ रही बात. A1 may be greater than A2, but A3 may be less than A4. It's possible. So in this case I want maybe high of A and low of B. If A3 is more than A4, then I want high of B also. Depending on the order of reaction, I have to see कि क्या रखने का है, concentration of A high रखने का है कि B high रखने का है, दोनों high रखने का है, एक high रखने का है. Is that understood? Dikshita. Yes, sir. Devendra. यस सर, थोड़ा थोड़ा. हाँ सर, थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा और क्या बहुत. मतलब परसीव करने में हार्ड है. हाँ परसीव करने में हार्ड है थोड़ा. क्या करने में हार्ड है. परसीव परसीव करने में. परसीव, see if you understand A, see initially we looked at only one reactant, right? ये जो देखा था हमने, we looked at only one reactant. कहाँ गया.
right? We had only one reactant. Yes, right. We looked at only one reactant रहा, suppose it's reaction of only A giving R and S, तो क्या होगा, right? A1 is more than A2, तो क्या करने का? A1 is less than A2, तो क्या करने का? A1 is equal to A2, तो क्या करने का? ये समझ में आया आपको? देवेंद्र, I can't hear you. यस सर, समझा सर. Right. Now question is, if there are two reactants, generally दो reactant ही रहता है. Some cases there's only one reactant, but most of the cases you'll have at least two reactants. तो दो reactant रहा तो कैसे करने का? How do we say? So then will become like, जैसे मैंने देखा बताया, right? दो reactant रहा, suppose दो reaction हो रहा है, A plus B goes A plus B gives R plus S. ऐसा reaction रहा तो क्या करेंगे? Then we have to consider order of reaction of both A and B. And what is the difference between order of reaction? इसलिए मैंने यहाँ दो डाला अभी, A3 and A4 भी डाला, which is order of reaction with respect to B. Then again, difference between A3 and A4 is also important, right? A3 is more than A4 रहा, then I should have more of B. A3 less than A4 रहा, then I should have less of B. A3 equal to A4 रहा, doesn't necessarily matter. So that the additional thing will come in, right? समझा गया देवेंद्र? हाँ सर, जो ये नहीं समझा कि ए और बी दोनों एक जो रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट कैसे देंगे एक ही बार में? होता है ना, होता है. एग्जाम्पल बताऊं आपको? सपोज ऐसे सर कंबशन रिएक्शन. फिनॉल लिया मैंने और उसका नाइट्रेशन किया. नाइट्रेशन इज व्हाट? ऑर्थो पैरा है कि मेटा है? नहीं, ऑर्थो डजंट रियली मैटर, HNO3 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो क्या बनेगा? व्हाट विल फॉर्म? नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन. बेंजीन कहाँ है? नाइट्रोफेनॉल. हाँ, लेकिन कौन सा पोजीशन पे जाएगा? ये मेटा नाइट्रोफेनॉल में मेटा क्यों होगा? नहीं, वो डिजायरेबल होगा, उसके साथ पैरा भी आएगा. नहीं, इसमें क्या बनेगा ये बताओ मेरे को पहले, ये बताओ, केमिस्ट्री बताओ पहले. फॉरगेट अबाउट डिजायरेबल एंड डिजायरेबल, केमिस्ट्री बताओ, ये रिएक्शन क्या होगा? नाइट्रेटिंग ग्रुप ऐड होगा ना, नाइट्रो ग्रुप ऐड होना ना सर, पैरा और कहाँ ऐड होगा? कहाँ पर ऐड होगा? सर मेटा पोजीशन. That means ortho OH is meta directing, is it? Is OH group meta directing? दीक्षिता, सिद्धि, सर ऑर्थो पैरा है. ortho para, excellent. As chemical engineer, you should never forget chemistry. So it will form either this, sorry, or it will form this. Barabar. Then now you have two reactants and two products. Now suppose I want more of para directing. I'm just giving an example. May not be right example. मुझे ध्यान में आया. Basically होता है, parallel reactions होता है. In this case, maybe order of reaction is 1-1. Then it doesn't really matter क्या concentration है. But हो सकता है कहीं पर order of reaction different हो, इसके लिए और इसके लिए. It could be like this.
We write it like this, but it should be like this also. It goes to or paradise position. सर अभी प्रणव बोल रहा था ना कि कंबस्शन रिएक्शन हाँ, कंबस्शन रिएक्शन का कौन सा कंबशन? वो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी देता है. नहीं, carbon plus oxygen giving carbon dioxide is not a parallel reaction. It is actually a series reaction. मेरे ख्याल से. और it could be सर yeah, कंबस्ट सर मीथेन का कंबशन वगैरह किया तो हाँ, मीथेन का कंबशन वगैरह किया तो हो सकता है ना, एक रिएक्शन CO2 और एक रिएक्शन हो CO का. सकता है, हो सकता है. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. ठीक है, हो सकता है. Now whether this is applicable for this, I mean this discussion will be applicable for these reactions, we have to see actually, because we need to find out order of reaction क्या होगा, इसका order of reaction क्या है, इसका order of reaction क्या है, then only we can see क्या करने का. But it is possible. ठीक है, Javendra, is it answering your question? हाँ सर आवाज नहीं आ रहा था. आवाज नहीं आ रहा है? नहीं मेरा आवाज नहीं आ रहा था क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा. ठीक है, तो डाउट क्लियर हुआ आपका? हाँ सर. ठीक है, so that's what we are saying कि अगर दो रिएक्टेंट रहा तो in that case how do we achieve the desired concentration of reactants in the reactor, right? और वो देख रहे थे हम कि अगर बैच रिएक्टर रहा तो कैसे कर सकते हैं हाई ए एंड हाई बी. अगर दोनों लो चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, एक हाई चाहिए एक लो चाहिए तो कैसे कर सकते हैं. All these situations can arise based on what is the order of reaction with respect to A and B. और सिमिलरली अगर कंटिन्यूस रिएक्टर रहा तो कैसे हो सकता है, अगर दोनों हाई चाहिए इधर यूज अ प्लग फ्लो रिएक्टर और यूज मिक्स फ्लो रिएक्टर्स इन सीरीज वेयर द नंबर ऑफ रिएक्टर्स इज क्वाइट हाई, 4-5 डाला तो हो जाएगा. अगर दोनों लो चाहिए तो यू कैन यूज सिंपल वन मिक्स फ्लो रिएक्टर बिकॉज इमीडिएटली ये और भी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है. और अगर किसी एक हाई चाहिए एक लो चाहिए तो देर आर टू वेज. वन इज प्लग फ्लो रिएक्टर में एक विल गो इन डायरेक्टली एज अ फीड और दूसरा साइड से ऐड करते जाएंगे, राइट. तो हमने थोड़ा सा ऐड किया यहाँ पर भी तो जितना होगा यहाँ पर, यहाँ से जितना आया यहाँ तक रिएक्ट हो जाएगा. फिर यहाँ पर थोड़ा आएगा यहाँ तक रिएक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा आएगा यहाँ तक रिएक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स बी विल ऑलवेज बी लो इन दिस केस एंड ए विल बी हाई बिकॉज ए इज इन द प्लग फ्लो एंड बी इज लाइक एन मिक्स फ्लो. दिस इज लाइक मिक्स फ्लो ऑफ बी, राइट. और यहाँ पर सेम सिचुएशन वी आर डूइंग n number of MFRs. So A is going in from 1 to 2nd to 3rd, so it's like plug flow for this one and mixed flow for this one, right. धीरे धीरे ऐड कर, जितना ऐड किया यहाँ रिएक्ट हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा रिएक्ट किया रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा ऐड किया रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. सो B will always be low in these reactors and A will be high. So these are equivalent configurations. अगर प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ करना है तो सीधा लेने का, बिकॉज प्लग फ्लो रिएक्टर इज सीन इट इज थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स लॉन्ग, राइट. तो बीच बीच में 100 मीटर्स के बाद थोड़ा बी ऐड कर दिया, फिर 100 मीटर्स के बाद बी ऐड कर दिया, फिर 100 मीटर्स के बाद बी ऐड कर दिया, तो जितना ऐड हो जाएगा उतना नेक्स्ट पहले रिएक्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एडिशन के पहले रिएक्ट हो जाएगा. सो दैट वे बी विल ऑलवेज बी मेंटेन लो एंड ए विल बी हाई. हेलो हाँ बोलो. सर, इसमें थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में फ्लोरेट सर सेम रखेंगे क्या दोनों, क्या डिफरेंट डिफरेंट होगा? डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड्स क्या चाहिए. सी वी डोंट नो, यू जस्ट गिविंग अ कॉन्फ़िगरेशन, डजंट रियली मैटर फ्लो रेट्स क्या है, राइट.
वो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, 1 mole of A reacts with 1 mole of B है कि 1 mole of A reacts with 2 moles of B. So all those things will come in depending on stoichiometry वगैरह. That's also important. Ultimate flow rate will decide कि कितना मोल्स है वहाँ पर, राइट, रिएक्टर में. ठीक है, समझ में आया कॉन्फ़िगरेशन फॉर सेमी कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन. यस सर. सर मतलब हेलो या बोलो. सर, ए का यील्ड जरा हमें ज्यादा चाहिए तो ऑलवेज थर्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है. एक आइड नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट आर डिजायरेबल प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए. उसके लिए हमारे क्या चाहिए, वी सीन दैट इन व्हेन डू वी नीड concentration of A to be high and when do we need concentration of B to be high, देखा था हमने, राइट, when you talked about only one reactant. दो रिएक्टेंट होगा, सेम एप्लीकेशन, सेम एनालिसिस वी अप्लाई फॉर टू रिएक्टेंट सेपरेटली कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए फॉर डिजायरेबल रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए और अनडिजायरेबल क्या है. तो A1 माइनस A2 के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे को ए हाई रखना है कि लो रखना है. सिमिलर अगर बी रहेगा तो बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर डिजायरेबल एंड डिजायरेबल देखना पड़ेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट डिफरेंस बिटवीन A3 एंड A4 यू कैन से कि बी हाई रखना है कि बी लो रखने का है. वो एनालिसिस करने के बाद देन बी से कि यार मेरे को ए हाई रखना है, दोनों, सपोज इट कम्स आउट कि मेरे को दोनों हाई रखने का है. सपोज A1 इज ग्रेटर देन A2 and A3 is greater than A4, right? Then I need both high, right? ऊपर का एनालिसिस में. तो देन आई कैन कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन. और अगर कंटिन्यूस रहा तो ये सेम, A1 greater than A2, A3 greater than A4. I can keep this configuration. Now suppose ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है. Now I want both low, that means A1 is less than A2 and A3 is less than A4. So I can keep this configuration and same thing here, A1 less than A2, A3 less than A4. So I can keep this configuration, both low. Right, जो हमने एनालिसिस एक रिएक्टेंट किया, सेम वी आर डूइंग फॉर टू रिएक्शन, देन वी डिसाइडिंग कि हमको क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. Now if I want A high, that means A1 is greater than A2 and A3 is less than A4. Then I should keep A high because A1 is more than A2. I should keep B low because A3 is less than A4. So in this case I can use this configuration. और यहाँ पर सेम हो गया, A1 is greater than A2 and A3 is less than A4. In this case I can use this configuration. So depending on order of reactions I can decide कि मेरे को क्या हाई चाहिए क्या लो चाहिए और उसके लिए अकॉर्डिंगली कहाँ क्या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टर्स मैं यूज़ कर सकता हूँ. कॉन्टैक्टिंग पैटर्न बोलते हैं इसको, इट्स कॉल्ड कॉन्टैक्टिंग पैटर्न. हाउ डू वी कॉन्टैक्ट द रिएक्टेंट्स, राइट. समझ में आया बात? यस सर. Anybody has any questions? We'll solve a problem for this पैटर्न्स के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए किस सिचुएशन में. सॉल्व एग्जाम्पल ही है, इफ़ यू हैव बुक यू कैन गो थ्रू इट. एग्जाम्पल 7.1 है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट वील गो थ्रू इट. ठीक है. If there are no questions, we'll stop here and we can continue next week. If you have questions, you can always